Before starting the celebration, let's seek blessings of God Almighty. I request our classmates to start the day with Bible reading followed by prayer song, dance, pledge and thought for the day. Reading from the Holy Bible. Be strong and courageous. Don't be frightened or dismayed. For the Lord God is with you wherever you go. Amen. प्रभु सुंदर मधुर देता है मन को तेरा एहसास। चारों दिशाओं में तेरी वाणी गूंजे छेड़े हर मन के तार। तेरा वचन गगन में, तेरा वचन पवन में, तेरा वचन चमन में, तेरा वचन मेरे भी मन में। For the day, let be freedom in our mind, soul and body, faith in our words and pride in our nature. Thank you. Divyanshi, what are you reading? I am reading and thinking. Sharanya, what comes to your mind when you think about Independence Day? Our national flag, people dressed in tricolored clothes and people moving around freely. Yes, that's common visual that we see today. But do you know, people did not have the freedom to do what they wanted years back. The freedom that we enjoy today is gift from our ancestors who worked hard for us to breathe in free India. On every Independence Day, we remember the contribution of so many great individuals who with their sweat and blood marked the end of 190 years British rule. On 15 August 1947, India declared as a free country. Yes, we shall forever be grateful for the uncountable sacrifices that were made to free our nation from the shackles of the British Raj. Several freedom fighters went through unimaginable pain and sacrificed their lives for the freedom of India. चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर लें। आइए देखें एक झलक हमारे कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की। We present before you the students of class LKG as freedom fighters. मेरा नाम है सुभाष चंद्र बोस। मेरा नारा है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Gandhi. Non-violence is the article of faith. नमस्कार, मैं जवाहरलाल नेहरू देश के लिए मेरा नारा है आराम आराम है। Swami Kanandaji was born on 5 January 1863 in Kolkata. The great Indian leader by Swami Vivekananda always remember, strength is life, weakness is death. Thank you. Thank you, Teenage Tots, for taking us down memory lane with your beautiful performance. कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना। We would like to pay our tribute to all the brave soldiers standing at borders and those who have lost their lives protecting our nation. Thank you.
Thank you for your bravery. Thank you for your sacrifice. Thank you for your service in fighting. Your bravery and sacrifice does not go unnoticed. चलिए फिर आपको ले चलते एक स्पेशल परफॉर्मेंस की ओर जहां हमारे छोटे छोटे एलकेजी के बच्चे अपना डांस प्रस्तुत करेंगे। चलिए देखते हैं। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। For a lovely performance. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो। Thank you. We owe our gratitude to all the freedom fighters, soldiers, and all those individuals who sacrificed their lives for the freedom of India. Our next performance is a tribute to all our national guardians. Now let's move on to our beautiful song presentation by our students. लागे
दो, मत फैला देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो, हमें मेरे छत पे तिरंगा रहने दो. In today's day and age, we are trapped and fighting for freedom from various evils created by us as an individual. Our next performance is a mime act by Tayyab of class 3. Thank you, Tayyab, for such an eye-opener performance. It really made us introspect. Now I would like to request most respected Principal Sister Sajana to please share her kind words on this occasion. Let us be proud of our motherland India, a country of unity in diversity. I love everyone. I respect everyone. Let this be the mantra for all during this period of COVID-19 pandemic. Freedom in the mind, faith in the words, and pride in our thoughts. Let us salute the nation on this Independence Day. May the Indian flag always fly higher, and let us celebrate this significant day with great pride, joy, and happiness. Wish you all a very happy Independence Day. Thank you, sister, for your motivating words. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. एकता में बड़ी शक्ति होती है. वह परिवार, समाज या देश बहुत तरक्की करता है जहाँ एकता होती है. एकता हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है. एकता हमें बुराइयों से लड़ने की ताकत देती है. Moving on to our next performance, which is a dance by class 3 and 6 depicting different shades of India.
On 15th August of every year, we honor our great freedom fighters in the national celebration of Independence Day. This day teaches us the importance of patriotism and strength, our unity, irrespective of any differences. We pay tribute to all the Indians who went through the struggle and fought back against the British government. Due to the selfless sacrifices of people, we are living in a free country. After 2 centuries of British rule, India got its independence. After 100 years of freedom struggle, all the states and union territories celebrate it with much enthusiasm and enjoyment. It is one of the greatest festival of democracy. Indian flag gets salute from everyone. That was an amazing presentation. We all know that doctors are nation builders and are also considered next to God, who have saved so many lives. During this COVID pandemic, we came across doctors all over the country working dedicatedly to serve the people. Many doctors sacrifice their lives for the people of the nation. The list of such selfless heroes is endless. Now we would like to request one such doctor, Dr. Rahul Singh, to please grace this occasion with his kind words. राइस ज्योति के रिस्पेक्टेड फादर, प्रिंसिपल, स्टाफ, मैनेजमेंट, बच्चे और उनके गार्जियन को डॉक्टर राहुल सिंह, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर सिंगरौली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम अपने पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करते हैं, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में या समाज में बराबर चैलेंजेस आते रहते हैं, जिसके सफलतापूर्वक सामना करने के बाद ही हम हमेशा आज़ाद रह पाएंगे। इस समय हमारे देश में कोविड नामक महामारी फैली हुई है, जिससे सारा संसार ग्रसित है, लेकिन उसमें इस बीमारी से वही समाज, देश सबसे पहले विजय प्राप्त करेगा जो ज़्यादा अनुशासित होगा। इसलिए हमें जब तक टीकाकरण हम लोग नहीं करा लेते हैं या हमारे देश में 100% टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक हमें कोविड के नियमों का पालन करना है। और जैसे ही हमें नंबर मिलता है या हमारे बच्चों के लिए सरकार ओपन करती है वैक्सीनेशन, हमें अपने बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण भी करा लेना है, ताकि हमारे स्कूल फिर से खुल सकें और हम अपनी आम जिंदगी में वापस आ सकें। अभी तक हमारे जिले को सरकार द्वारा 8 लाख वयस्कों को टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके तहत हम लोगों ने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके की पहली डोज लगा चुके हैं और द्वितीय डोज भी 60,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। अर्थात ये 60,000 लोग पूर्ण रूप से टीकाकृत होकर सुरक्षित हो चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना नंबर आते ही अपना टीकाकरण कराएं, ताकि हम अपनी वापस जिंदगी में, खुशहाल जिंदगी में वापस आ सकें। जय हिंद। Thank you, sir, for encouraging words. Now would like to request Praveen ma'am, Poonam ma'am and Prachi ma'am to share something with us. 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिल हमारे एक हैं, एक ही हमारी जान। दिल हमारे एक है, एक ही हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। Even the smallest of the effort count. So keep doing a little good every day, and one day we will have a country independent from all its problems. A very happy Independence Day to everyone. Jai Hind. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। India is the cradle of human race. It is the birthplace of human speech. It is the mother of history. It is the grandmother of legends and the great-grandmother of traditions. The most valuable materials in the history of mankind are treasured in India only. It is our responsibility to preserve this freedom.
it is also our responsibility to hand over a better India to our future generations. A very happy Independence Day to all of you. Jai Hind. Thank you, teachers, for your lovely message. Now I would request Neha Mashri of Class 6 to present the vote of thanks. It's gratitude that brings us happiness. On behalf of everyone, I would like to take this opportunity to propose a vote of thanks to acknowledge the presence and contribution of everyone who made this program wonderful. First of all, we would like to extend our most sincere thanks to our God Almighty for His blessings and grace. We would like to extend our heartfelt gratitude to Reverend Father Anil, our school manager, for his unconditional support. Respected Sister Sajana, our school principal, for her encouragement. And our teachers, Praveen ma'am, Poonam Mishra ma'am, Prachi ma'am and Varsha ma'am for their guidance and support. We would also like to thank all teachers, parents and students for their valuable time and kind presence. Thank you. We would request everyone to stand up for the national